Assalamu alaikum. Welcome to CSS Academy 29. Whether you are preparing for competitive exams or simply looking to refine your communication skills, this journey is designed for you. Mastering English in 30 days. Welcome to a transformative journey here at CSS Academy 29. They say that language is the key to the world, but for a dreamer, it is the bridge between ambitions and achievement. For the next 30 days, we are not just learning grammar and vocabulary, we are building the confidence to speak your truth and the precision to write your future. Whether you are aiming for the highest rank of public service or simply want to find your voice in a global conversation, this service is crafted to take you from the basics of structure to the elegance of expressions. 1 month, one goal, a lifetime of impact. I am your host, and this day one of your 30 days challenge, English Mastery. Let's begin our lecture today. फर्स्ट डे ऑफ 30 डेज चैलेंज इंग्लिश लर्निंग। पहला दिन अंग्रेजी ज़ुबान की बुनियादी तारुफ, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश। वेलकम टू डे वन। टू स्पीक और राइट इंग्लिश करेक्टली वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जस्ट एज अ हाउस इज मेड ऑफ bricks, cement and wood, a sentence is made of different type of words. The core parts of speech. Noun, ism. A noun is the name of a person, place, thing or idea. Noun, किस चीज़ का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम और आइडिया नाउन कहलाता है। Ism, noun. English, a noun is the name of a person, place, thing or idea. For example, Ali, Lahore, book, happiness. उर्दू, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम को इसम कहते हैं। मसलन अली, लाहौर, किताब या खुशी। एहसास को भी हम इसम कह सकते हैं। प्रोनाउन, इसम ज़मीर। प्रोनाउन, a word used in place of a noun to avoid repetition. Example, he, she, it, they, we. उर्दू, वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो ताकि बार बार नाम न लेना पड़े। मिसलन वो, हम, तुम। ये नाउन की जगह जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे ही, शी, इट, तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब, verb, fail, a word that describes an action or a state of being. Without a verb, a sentence is incomplete. Example, eat, run, sleep, is, am, are. उर्दू, वो लफ्ज़ जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करे, फेल किए बगैर जुमला ना मुकम्मल होता है। मसलन खाना, दौड़ना, सोना वगैरह। Practice exercise. Practice exercise. Look at this sentence. Ali is reading a book. Ali is equal to noun. Is reading a verb. Book is a noun. Ali is reading a book. इस जुमले को देखें कि अली किताब पढ़ रहा है। अली एक इसम है, is reading एक फेल है और book एक नाउन है। फेल वो होता है जो हम काम कर रहे होते हैं। नाउन वो होता है जो जिस पर काम किया जा रहा हो या जो काम कर रहा हो। कंक्लूजन्स एंड होमवर्क, काम और होमवर्क। योर सेल्फ टास्क फॉर टुडे इज टू फाइंड 5 nouns and 5 verbs from your surroundings and write them down. Tomorrow we will learn how to join these words to make a basic sentence. आज का आपका काम ये है कि अपने इर्द गिर्द से 5 इसम और वर्ब तलाश करें। कल हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जोड़कर एक सादा जुमला कैसे बनाया जा सकता है, और ये आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने क्या सीखा है। तो प्लीज़ आपने जो है वीडियो को लाजमी पूरा देखकर तो खुद से वर्ब
और नाउन की पहचान करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाजमी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे 30 डेज चैलेंज में हमारे साथ रहिएगा। Answer in the comment section you will be happy from this lecture or not. Thank you and Allah Hafiz. Thank you for watching the video and answer in the comment section you will be happy from the lecture or not. And please subscribe the channel for more videos. Next we will learn about how the sentences are made.
Assalamu alaikum. Welcome to CSS Academy 29. Whether you are preparing for competitive exams or simply looking to refine your communication skills, this journey is designed for you. Mastering English in 30 days. Welcome to a transformative journey here at CSS Academy 29. They say that language is the key to the world, but for a dreamer, it is the bridge between ambitions and achievement. For the next 30 days, we are not just learning grammar and vocabulary, we are building the confidence to speak your truth and the precision to write your future. Whether you are aiming for the highest rank of public service or simply want to find your voice in a global. Assalamu alaikum. Welcome to CSS Academy 29. Whether you are preparing for competitive exams or simply looking to refine your communication skills, this journey is designed for you. Mastering English in 30 days. Welcome to a transformative journey here at CSS Academy 29. They say that language is the key to the world, but for a dreamer, it is the bridge between ambitions and achievement. For the next 30 days, we are not just learning grammar and vocabulary, we are building the confidence to speak your truth and the precision to write your future. Whether you are aiming for the highest rank of public service or simply want to find your voice in a global conversation, this service is crafted to take you from the basics of structure to the elegance of expressions. 1 month, one goal, a lifetime of impact. I am your host, and this day one of your 30 days challenge, English Mastery. Let's begin our lecture today. Day 1, the building blocks of English. पहला दिन अंग्रेजी जुबान की बुनियादी तारुफ इंट्रोडक्शन. English. Welcome to day 1. To speak or write English correctly, we must first understand parts of speech. Just as a house is made of bricks, cement, and wood, a sentence is made